Today we will discuss about coordinate chemistry. Coordinate chemistry what is coordinate chemistry? It is a branch of chemistry which deals with the study of complex compounds, which also known as coordinate compounds. Coordinate compounds contains central metal ion which is surrounded by a number of charged or neutral molecules within the square bracket. Complex compound hame kahaku kahiba? A central metal atom. Consider I am taking a central metal atom Fe which is surrounded by charged or neutral molecules within a square bracket. This is known as complex compound or coordinate compound. ए टाइप रो कंपाउंड विषय रे जते हम स्टडी करू से पार्ट को हमें कहू कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री. तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और सॉल्ट डबल सॉल्ट मान भितर डिफरेंस कौन? व्हाट इज नॉर्मल सॉल्ट? Normal salt are the compounds which are formed by replacing the replaceable hydrogen atom from acid by metal atom. Consider HCl लिखुची. So HCl रे hydrogen is the replaceable hydrogen atom. That's why it can form NaCl. Similarly, if I am writing H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड रे आम पाखे दीटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम अच्छी. सो इट विल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ दी प्रकार सॉल्ट बन पार. दैट इज NaHSO4 एंड Na2SO4. गोटे सॉल्ट गोटे एसिड केते प्रकार सॉल्ट बन पार डिपेंड करे हाउ मेनी replaceable hydrogen atoms are there. Consider I am writing acetic acid CH3COOH. Here I can see 3 plus 1. I got 3 plus 1 4 hydrogen atom. चार्टा hydrogen atom थिले भी हमें जानी चे in organic acid only carboxylic group have the tendency to lose H plus ion. तो से केवल यही हाइड्रोजन पाखे यही हाइड्रोजन टी ही रिप्लेसेबल. चार्टा हाइड्रोजन थिले भी ये गोटे हाइड्रोजन दे पारिबो. सेथिपई एठी गोटे पॉसिबिलिटी होची दैट इज CH3COONA. तो गोटे एसिड केतेटा सॉल्ट फॉर्मेशन करि पारिबो दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. तो गोटे एसिड रे जदि ऑक्सीजन एटम थाए केतरा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम अच्छी? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम आम केमती काउंट करिबा? दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट -1. गोटे एसिड रे जतेटा ऑक्सीजन एटम थिबो सेथिरु गोटे एटम माइनस कर देले that is the number of replaceable hydrogen atom present in that acid. एतिर हमें एटा काउंट करि परिबा. प्रोबेबली जो एसिड रे ऑक्सीजन एटम अछि ए फॉर्मूलाटी केवल तांको पई ही एप्लीकेबल. few acids may be exceptional. Conditions apply. तो depending upon the formation of salt ro pH less than 7 ही पारे, more than 7 ही पारे और इक्वल टू 7 ही पारे. नेक्स्ट आसवा डबल सॉल्ट. ये टाइप रो सॉल्ट को हमें ना देले नॉर्मल सॉल्ट. देन हम डिस्कस करबा डबल सॉल्ट विषय रे. What is double salt? It is a mixture of two simple salts in equimolar proportion which exist in solid state. मन कर दीटा नॉर्मल सॉल्ट A और B को मु मिक्स करी इन 1:1 रेशियो.
then it is called equimolar proportion. Then the salt will be written as A dot B dot NH2O. केतरा वाटर मॉलिक्यूल मुझे यूज कली एंड क्रिस्टलाइज्ड ताको लास्ट को क्रिस्टलाइजेशन करी. If I have dissolved two different salts in equimolar proportion followed by crystallization, that will form a double salt. तो कंसीडर करो मु फेरस सल्फेट नेली ये गोटे नॉर्मल सॉल्ट से अमोनियम सल्फेट ऐड कली दैट इज अनदर नॉर्मल सॉल्ट किसी वाटर मॉलिक्यूल एथरे देली सो दिस विल प्रोड्यूस FeSO4 dot NH4 whole to SO4 dot 6H2O. एक आम कॉमनली जाने मोर्स सॉल्ट. एठी दीटा सॉल्ट को 1:1 रेशियो रे वाटर रे डिजॉल्व करके ताको क्रिस्टलाइज करली सेठू जो सॉल्ट आसेला दैट इज नोन एज डबल सॉल्ट. से बड़े हम पाखरे पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट 24H2O गोटे एग्जांपल अछि पोटासियम that is example is K2SO4 dot Al2SO4 whole 3 to 24H2. Another example is carnallite. Potassium chloride dot magnesium chloride dot 6H2O. तो हमें दीटा डिफरेंट सॉल्ट को वाटर रे ऐड करिकी ताकू जदि हमें क्रिस्टलाइज करिबा ताकू हमें डबल सॉल्ट कहूचे. ताले डबल सॉल्ट रो कौन कौन क्राइटेरिया बा प्रॉपर्टीज अछि दे एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टल फॉर्म. एमाने सब बेले हमकु क्रिस्टल फॉर्म रे मिलिबे किंतु सॉल्ट में बी अमorphous. दे आयनाइज ऑन डिसॉल्विंग विथ वाटर. जदि मु एकु सिंपली वाटर रे ऐड करिबी दे विल प्रोड्यूस देयर रेस्पेक्टिव आयंस. मुझे यदि मोर सॉल्ट को वाटर रे ऐड करी दिस विल गिव Fe2 प्लस आयन NH4 प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन. जदि मोर सॉल्ट को सिंपली वाटर रे ऐड करी आई विल गेट द रेस्पेक्टिव आयंस. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट. एठी जो मेटल आयंस माने अछंती से माने ताको नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करंती. That is about the salt. Now discuss करिबा about complex compounds. तो हमें complex compound रे कौन अछि ना एठी जदि मोर एग्जांपल दिए K4 FeCN whole 6 ये होछि गोटे complex compound. एको जदि मु वाटर रे ऐड करे दिस विल नॉट आयनाइज. एठी केवल पोटासियम स्क्वायर ब्रैकेट बाहर जो पार्टा अछि दैट इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर. दिस पार्ट इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर. दिस कैन बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट भितर जो पार्टा अच्छी दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस पार्ट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन स्फीयर. मुझे यदि ये कंपाउंड टी को वाटर रे ऐड करे व्हाट आई विल गेट I'll get 4K plus FeCN whole 6 4 minus. तो ये हम क्लियरली देख पारे ये आम पाखे दीटा मेटाल अच्छी गोटे पोटासियम और गोटे आयरन अच्छी बट केवल हमको पोटासियम प्लस आयरन मिलूँ जोटि आयरन चार्ज मिलू ना. तो सॉल्ट आउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भितर ये गोटे बड़ डिफरेंस जे पोटासियम
सॉल्ट रे तुमको जिते प्रकार मेटल आयन्स अच्छी समस्ते प्रेजेंट मिलिबे we can detect the presence of metal ion by qualitative analysis in case of normal salt. But when we are discussing about a coordinate compound or complex compound, we cannot identify the presence of metal ion by qualitative analysis because they do not ionize. So जो part टा ionize हुए नहीं, this part is known as coordination sphere, and ए part टा जेहेतु ionize होची सेथिपाई या ना होची ionization sphere. एबे जदि हम further study करिबा एथिरे जो मेटल टी ब्रैकेट भितर स्क्वायर ब्रैकेट भितर जो मेटल टी अछि ताको हम कहिबा सेंट्रल मेटल एटम शॉर्ट रे हम CMA कहिबा स्क्वायर ब्रैकेट भितर जहाँ अच्छी ताको हम कॉम्प्लेक्स बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहू ता भितर जो मेटल टी प्रेजेंट अछि ताको हम सेंट्रल मेटल एटम कहिबा ताको छाड़ी के आ जहाँ रहिला दैट इज नोन एज लिगैंड गोटे सेंट्रल मेटल एटम केतटा लिगैंड सहित अटैच अछि केतटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करूची ताको हमें कहूचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नॉर्मली अभी हमें पढ़िले जे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइज हुए नहीं जदि ए रूल को से फॉलो करे ताहले ताको हम कहबा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अच्छी सी आयनाइज हुए नहीं कि डिसोसिएट करे नहीं ताको हमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहू किंतु किछि केसेस रे जमते हम नोबल मेटल सिल्वर सहित जदि कोनोसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन हुए सी फॉर्माल्डिहाइड सहित रिएक्शन करे सेथिपय ताको हमें कहू इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर. जदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक करे ताहले ता ना हला imperfect coordination sphere. That is example hela HgNH3 whole 2 plus. This is one of the example of coordination sphere because एको जदि हमें formaldehyde सहित reaction करिबा this will show a silver mirror test. सेमती complex उपरे आमर चार्ज डेभलप हो पारे न भी हो पारे ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर ऑफ 3 टाइप्स. जदि हम क्लासिफिकेशन पढ़िबा तो परफेक्शन बेसिस आम दु प्रकार कले जदि रूल को ओबे कला इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डू नॉट आयनाइजेस देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इफ इट आयनाइजेस देन इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज on the basis of charge coordination sphere is of 3 types: cationic, anionic and neutral. तो क्लियरली जानिए जदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसे जस्ट फॉर एग्जांपल निकेल whole 6 2 plus. This is one of the example of cationic coordination cationic complex. यदि गोटे कॉम्प्लेक्स ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए ताहले ताको हम cationic complex कहिबा. सिमिलरली यदि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए जेमति हम एठी अमोनियम सियानाइड रो एग्जांपल नै परिबा यार एग्जांपल देख परिबा एठी हमरो नेगेटिव चार्ज डेवलप होची सो इट इज ए anionic complex. So another example is anionic complex whole 6 4 minus. Similarly किसी complex ऊपर there is no charge ताको हमें ना देले neutral complex. Example निकेल कार्बोनिल यहाँ पर कौन सी चार्ज डेवलप हो नहीं so it is called neutral charge complex.